So first of all, thank you very much for coming and attend this Islamic course. And it comes to the end of the program. So may I now first invite our chairperson from the Board of Trustees, Mr. Thomas, to say a few words in front of you. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Maulana Muhammad Hanif Jalandhari Sahab, Brother Lateef Farooqi, Chairman Dawa Committee, Mufti Muhammad Rashid Sahab, Deputy Chairman of Dawa Committee, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and very good afternoon. Indeed, it is a great honor for us that among us today we have a great scholar from Pakistan, Maulana Hanif Jalandhari. We are lucky that luckily he was visiting Hong Kong and he is present today among us. On behalf of Board of Trustees, I congratulate all the attendees for attending the Islamic Intermediate course on Islam. I hope this has broadened your knowledge about Islam and most of your misconception about Islam has been cleared. Islam is a religion of peace and love, which every Muslim must follow. Mosques are house of God. These are open for all faithful people. The imams and volunteers of Kolum Mosque Dawa Committee are available to provide all assistance and support for more understanding about Islam. I hope you will continue to make efforts to understand more about Islam, and this will be beneficial in your life. On behalf of Board of Trustees, I also grateful for Kolum Mosque Dawa Committee for making this program successful. They have put a lot of efforts. I'm especially thankful to Brother Yusuf Job, Brother Lateef Farooqi, Sister Zarina O, Dr. Haq, Chief Imam Muhammad Rashid, all the imams and volunteers. Maybe I'm missing some names, please forgive me. I give you assurance that on behalf of Board of Trustees, all the assistance you require, we will stand with you all the time, and inshallah this program in future will continue also, and we will provide all the services. And any of you in future, if they want to seek more understanding about Islam, our imams and volunteers are available to provide that. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you, Mr. Roman. And now it's our honor to have a Islamic scholar from Pakistan to come to share with us today at the end of our program. So may I now invite Mr. Muhammad Hanif Jalandhari to come. Thank you. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العظيم. محترم جناب قمر زمان صاحب, محترم جناب لطیف فاروقی صاحب, حضرت مولانا مفتی محمد رشید صاحب اور شرکائے مجلس, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے لیے خوشی, مسرت اور اعزاز کی بات ہے کہ میں جامع مسجد کولون میں ہونے والی شارٹ کورس کی اختتامی مجلس میں آپ کے ساتھ شریک ہوں. Bismillahirrahmanirrahim. The scholar who came here, his name is Muhammad Hanif Jalandhari, who is the head of the institution at the University of Khair Madaris, and he is the head of APUR that is looking after
unfortunately he is here and he has started with praising Allah subhanahu wa ta'ala, invoking salat and salam, peace upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and then he greet you with a greeting of peace and love, and then he said that this is an honor for me that I am among you, and this is a great occasion that I am at the time of the graduation ceremony. I am here in Hong Kong in Kowloon Mosque with you. मैं आपको इस कोर्स में शिरकत पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और दो बातें आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। पहली बात ये कि आपने इस कोर्स में यकीनन इस्लाम को समझा होगा और आपके सामने इस्लाम का तारुफ पेश किया गया होगा। इस्लाम करैक्टर पर बिलीव करता है, किरदार पर यकीन रखता है और उस किरदार में सबसे बड़ा किरदार सच का होता है। हमारे पैगंबर इस्लाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सबसे पहली दलील ये थी कि मैं अल्लाह का नबी और पैगंबर हूँ, तो उसमें उन्होंने अपना करैक्टर पेश किया और अपने आप को ये पेश किया कि मैंने तुम्हारे अंदर 40 ईयर जो गुजारे हैं, क्या कभी मैंने आज तक तुमसे झूठ बोला है? तो जो नहीं मानते थे, मानने और ना मानने वालों ने सबने इसका एतराफ़ किया, बेज़बान कहा कि हमने आज तक आपको कभी झूठ बोलते नहीं देखा। तो कहा जब मैंने लोगों पर झूठ नहीं बोला तो मैं खुदा पर और गाढ़ पर कैसे झूठ बोलूँगा? तो सबसे पहली चीज़ जो पैगंबर इस्लाम की है वो करैक्टर की है और करैक्टर में सबसे बड़ा करैक्टर वो सच का है, सच्चाई का है। और ये सच वो चीज़ है जो जिसने नबूवत को साबित किया, यानी हमारे नबी की नबूवत ने सच को साबित नहीं किया बल्कि सदाकत और सच्चाई ने नबी के नबी होने को मनवाया। करैक्टर ने उनको नहीं मनवाया, नबी ने अपने करैक्टर को नहीं मनवाया, करैक्टर ने नबी को मनवाया। The scholar has said that first of all I congratulate to all of you for attending this course, and he said that he believed that you would have understood the religion of Islam and its characteristics and its qualities, and he said that I would like to tell two things in this occasion. The first and the most important thing, the religion of Islam emphasizes on characters, and among the characters, the best and the highest point is saying and telling truth, and the truthfulness is a quality that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the last prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, has informed and has told the people at the time of claiming that he is a prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. The first question that he asked from the people that I have spent 40 years among you, how you have found me, whether I have told you in my life or you have experienced with me with saying the truth. And they were all agreed on the point that we have experienced many times and we always have experienced. You always tell the truth. So the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that I cannot tell a lie with you. How I can tell a lie on Allah subhanahu wa ta'ala? So this is the first evidence that Prophet Muhammad produced for his prophethood, that was the character of truthfulness. लिहाजा हम भी अपने करैक्टर को दुरुस्त करें और हम करैक्टर में ख़ास तौर पर सच को बोलें। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी सच्चाई की तलाश का ये सफ़र जारी रखें। आपका ये सफ़र सच्चाई की तलाश का है और मैं उम्मीद रखता हूँ और दुआ करता हूँ कि आप अपने इस सफ़र को जारी रखें और आप एक न एक दिन सच को ज़रूर पालेंगे। Very important thing he indicated and he advised that we all should stand on truth and we should be with truth. This should be our goal. And as you have started to find the truthful in your life, in spirituality, so continue this journey and I believe you will find a day that you will find the truth in your spirituality, in finding of the religion. सेकेंडली मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि इस्लाम वो दीन है, ये मज़हब नहीं है बल्कि दीन है। और दीन और मज़हब में ये फ़र्क होता है कि मज़हब एक महदूद होता है और दीन एक गैर महदूद पूरी ज़िंदगी के ज़ाब्ते का नाम है, एक कंप्लीट दस्तूर हयात और ज़ाब्ते ज़िंदगी का नाम है। तो इस्लाम मज़हब नहीं है बल्कि इस्लाम दीन है।
यानी ये हमारे गॉड की तरफ से हमारी पूरी लाइफ का एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, एक पूरा दस्तूर है जो जिंदगी को अल्लाह ने हमें दिया है। तो इसलिए इसे आप इस नज़र से स्टडी करें कि ये हमारी पूरी लाइफ का एक आइन है जो हमारे गॉड ने हमें दिया है। और थर्ड बात मैं ये करना चाहूँगा कि इस्लाम ये दुनिया में तमाम मज़ाहिब के बाद आया है, और ज़ाहिर है कि जब जो चीज़ सबसे आखिर में होती है, लास्ट में होती है, तो वो ज़्यादा कंप्लीट होती है और वो ज़्यादा, जैसे जो मॉडल बाद में आता है वो मॉडल पहले तमाम मॉडलों के जो तजर्बात होते हैं उनको सामने रखकर बनाया जाता है, और ये लास्ट मॉडल है, ये फाइनल मॉडल है और आखिर तक है, क़यामत तक के लिए। तो इसलिए जब ये आखिरी और लास्ट है तो इसमें लाया है कि पहले की जो खूबियाँ होंगी वो भी, और उन तजर्बात में जो कमी होगी उसको भी इसमें देखा गया होगा। तो दूसरी बात मैंने आपके सामने जो रखी वो भी आप ये सच्चाई का तलाश का सफर जारी रखें, और मैंने आपसे कहा कि आप सच को पालेंगे। और फिर मैंने ये बात भी आपसे कही कि इस्लाम जो है ये सबसे लास्ट में आया, और आखिरी बात यह है कि इस्लाम को आप स्टडी करेंगे तो इस्लाम इंसानियत की बात करता है, यानी वो सिर्फ अपने मदद के मानने वालों की बात नहीं करता बल्कि वो इंसानियत की बात करता है। इसलिए वो यार नास कहता है, कुरान को हुदन नास कहता है, हमें कहता है हुदन नास। तो हम ये चाहते हैं कि पूरी इंसानियत को हम इकट्ठा करें और इंसानियत एक जगह आए, और उस इंसानियत को जोड़ने वाला जो है वो वही आसमानी वही हो सकती है, और आखिरी आसमानी वही जो है वो यही इस्लाम है। और दुनिया में जितनी भी वहियाँ आई हैं वो शायद अपनी असल शक्ल में नहीं है, मगर ये वही इलाही वो है जो अपनी असल शक्ल में भी है और मुकम्मल शक्ल में भी है। हमारी नाम बला। Thank you very much, Sheikh Muhammad Ali Jalandhari. Sheikh has said that two important things that he has indicated, he has stated. The first, Islam is a complete code of life. Islam, unlike other religion, it has all kind of guidance in all field of life. Wherever you are living, whatever you are working, you will find Islam is guiding you. Islam is leading you. Unlike other religion, they guide the human being in spirituality, in specific and limited field. But Islam has not the vast religion which guides all the people, all human beings in all field of life. And the last thing that he said, that Islam is a latest form of religion. Islam as the latest form of religion in a way that the previous religion, what they had the qualities, Islam has gathered all the qualities, and moreover the other qualities has been given in this religion. So it is given by Allah subhanahu wa ta'ala. And the last thing that he said, that Islam is a religion or the code of life for all mankind. It is not addressing only for the believers, for the Muslims. It is addressing to the all mankind, all human beings. That is why when Quran addressed, it addressed with the word Ya ayyuhan nas, O people. Ya ayyuhan, O children of Adam. So Islam is not only for the believer, it is the religion, it is the guidance for all mankind. So we have to continue our journey of searching and finding the truth. And I believe you will get the last answer. The truth is Islam, and Islam is the truth. And thank you very much. So now it's the time for us to present the certificates to our participants. So we are now invite our chairman, Mr. Thomas, to present some of the certificates to our participants who have attended 70% or more attendance for the program. Mr. Thomas. Mr. Khan Hafiz Ahmed. Give up the representative. And Mr. Terry Paul, Mr. Lee Peng,
Miss Maria Yin Dao Yo, and Miss Sarah Yin Dao Yo. May I invite Mr. Khan and Miss Agnes to come? They will have a group picture. Please show your certificates. Maybe one more? Oh, best just not show your certificates. Okay, thank you. Now may I invite Mr. Muhammad Hanif to present some of the certificates. Mr. Hanif. Miss Maria Okado. Wang Hang Yu. Miss Wang Xiu Wai. Miss Tang So Lai and Mr. Sadiq Talat. Wang Xiu Wai. Thank you. May I now invite Mufti Arshad to present some of the certificates. Miss Chan Yong Chong, Chan Bo Chiu, Chan Sao Yu, Zhao A Wai, Jie Guang Xu. Thank you, Mufti. So now may I invite Imam Shai to present some of the certificates. Choi Siu Feng, Zhao Lei Yo, Ha Wei Yan, Hui Hui La, Gok Si Sen. Zhao Lei Yo, Ha Wei Yan. Thank you, Imam. Now may I invite Mr. Faruqi, the double chairman of the Islamic Kaur Masjid, Kok Si Heng, Lei Yin Meng, Leung Ga Yu, Leung Cẩm Meng, Leung Wai Na. Lei Yi Wan,
Thank you, Mr. Dorothy. Now may I invite Dr. Hak to present some of the certificates. Liêu Mạnh Kiết, Lầu Chỉ Tề, Lầu Mạnh Phong, Mã Đình Trung, Mã Duyệt Hữu, Lầu Mạnh Phong Hà Nội. Okay, thank you. Thank you, Dr. May I now invite Brother Anisha to present some of the certificates. Mạc Gia Lộc, Ngày Pha, Trần Hoài Chiêu, Quan Minh Trung, Hoàng Thái Trung. Thank you, Brother Anisha. Now may I invite Mr. Rasa to present some of the certificates. Yes. Wong Yên Trân, Nhau Si Trân, Hoàng Nhục Nản, Trân Mạnh, Diều Phui Hoàng. Có冇朋友係你覺得你應該攞到證書，但係未有證書嘅？請舉手啊！
So what we need to do is just for a little bit, okay, to the middle. Okay, này là yes, xíu xíu là thọ ra là bên trong này. Mà như vậy nó cũng được đấy. And please all the helpers, all the brothers, sisters, please also join us, and we will have a group photos together.紙張先啊，得唔得？大啦呢張，不過我諗可以擺旁邊闊啲就好過咁後就睇唔到。闊啲仲得，係啦，闊啲好啲。最尾嗰行嗰啲去翻旁邊，最尾嗰兩行都去翻旁邊，最尾嗰兩行睇唔到嘅。但係你嗰行睇唔到。旁邊可以睇多啲嘅，旁邊有位嘅，旁邊有位睇到嘅，係啦，咁樣係啦，呢一行係差唔多啦，呢邊都可以擺啲，如果唔係企喺度咧，最尾嗰啲就好，咁我哋影3張嚇 ，1 2 3 ，OK。